जितना मैं काम करने लगी उतना लोग खुश होने के बजाय और दुखी होने लगे. Anybody who wants to fly and anybody who gives that wind beneath your wing are unaccepted in our society. मुझसे ज़्यादा तो लोगों को परेशानी होती है कि गुरमीत के मम्मी पापा क्यों नहीं रहते हैं, वो क्यों नहीं वो रहते हैं. That means he is a bad son and क्यों bad son? हाय देबीना जी, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट. कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ. हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू फॉर लेटिंग अस इनटू योर होम एंड डूइंग दिस इन अ पीसफुल नाइस कॉन्वर्जेशनलिस्ट मैनर. तो हम लोग ना हमेशा ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इवॉल्व हो सकते हैं ह्यूमैनिटी के साथ. एज मर्द हम कैसे बेटर हो सकते हैं. बट सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि आपकी परवरिश, आपका एरिया व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, हाउ वाज चाइल्डहुड लाइक फॉर यू? व्हाट वाज द सीन इन द हाउस? I had a very mixed, childhood. In the sense, my home was liberal. Okay. And my just that boundary outside the home wasn't. I mean, वो लोग ऐसे थे कि हमें नहीं बदलना, हम अभी भी वही करते हैं और करते रहेंगे जो हम करते आए हैं. सो मुझे हर एक दिन मुझे लगता था कि मतलब घर में मैं अलग हूँ और बाहर जाते ही मैं अलग हूँ. एंड इसीलिए आई थिंक माई मॉम राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड थोड़ा सा मतलब इट वॉज ओनली माई मॉम्स कंसर्न कि घर से बाहर जा रहे हो तो ऐसे पहन के जाओ. बचपन से मेरे अंदर एक रिवोल्ट टाइप का आ गया था कि मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैं क्यों नहीं पहनूँ. मुझे याद है कि मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी क्यों. उनकी वो हमारे घर पे है, वो हमें देखते हैं, वो हमें जानते हैं. उसका कोई सपना भी है, मेरा है बहुत सारे सपने which I have to cultivate and culminate, work towards. तो जिसके लिए I just wanted to just be me. आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपके पापा आपको एक तरीके से बढ़ावा देते थे and he would give you the wings of sorts. Absolutely. How does a father make that happen? For all the fathers watching this, I'm hoping. A father makes that happen by just unspokenly understanding me and my dreams as his own. So बचपन से मन में वो सपना था कि I'll participate in Miss India, पर हिम्मत नहीं होती थी. एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में देखा, that time I was in class 11. न्यूज़पेपर में देखा the entries for Miss Calcutta they are asking for. So I just took the newspaper to my mom and I said, "Arey, see, they are asking for the entries for Miss Calcutta." My mom was like, "Okay, but I am very afraid. You go and talk to dad." I was like, "No, you talk to dad." So I never understood it in my childhood until today कि मेरे पापा ही मेरे सारे ड्रीम्स को क्रश कर सकते थे by not allowing me to, by imposing a no. He never said anything. He never said a no, and he always said that she is a rich daughter of a poor father. So whenever I asked for anything, whatever जो भी उनका हैसियत था उससे ज़्यादा उन्होंने किया. Not giving me luxuries. I never had luxuries. We didn't have car. I used to travel by bus. But giving the luxury of pursuing my dreams. उसमें भी पैसे लगते हैं, बहुत नहीं तो आपके हैसियत के अनुसार. That thing of my dad, I think the people in my locality had seen. तो कहीं ना कहीं एक hostility उन लोगों के दिमाग में घुस गया था. And the way my dad used to support me, तो उन लोगों को ऐसा मतलब my dad was an alien for them. तो एक दिन एक पता नहीं क्या हुआ, छोटा सा कहाँ से कुछ झगड़ा हुआ and they were fighting with me. I don't remember, but I remember they were fighting with me and I was like, you don't have dreams, I remember the fight. You don't have any dreams, you will live here forever, but I have bigger dreams. And I was a little girl, but I was fighting. Suddenly they turned around and they said, they took my dad's name and said, he's coming, come, let's go and beat him. Everybody started rushing and my dad did not know anything. He was just walking back home and he just saw that people were coming and howling towards him. There were others obviously who saved him, but I knew that anybody who wants to fly and anybody who gives that wind beneath your wing
are unaccepted in our society. I knew it then. So I'm trying to understand कि आप ये जो रिबेल बनी आपने बताया, इसका आपको सीड पता है क्या, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ था ये कि आपको पता नहीं, आप बस यू बिकेम वन ऑफ दिस वुमेन हु वाज लाइक नहीं यार मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसा जीना चाहती हूँ? You pave your own path and your path is your own. तो इसको एक you can't put everything Into a box. yeah, हाँ, वो into खांचे one में डाल box. देते खांचे हैं। में नहीं डाल सकते हो कि ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता है. I paved my own path. कैलकाटा में मैंने खुद जैसे पापा ने ब्यूटी पेजेंट पे मेरा नाम डाला, उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई फ्रॉम वन वर्क लेड टू अनदर एंड अनदर एंड अनदर. अराउंड दैट टाइम देयर वर होर्डिंग्स ऑल ओवर विथ माय photographs all over. I did some of the biggest brands, but लोगों का mentality खुश होने के बजाय I was seeing that they were just becoming more and more unhappy about the whole thing. कि it's a very bad thing. I mean the path to this must have been very bad and ugly. When my dad helped me come to Mumbai, so they were like आपने वहाँ छोड़ दिया, मतलब बेटी को भेज दिया मुंबई कैसे, मतलब इट्स लाइक द डर्टीएस्ट प्लेस, वेयर डज शी लिव, मतलब इन सम स्लम, दिस दैट. द वे पीपल थिंक इज वेरी क्लीशे फॉर द work that happens here, for the way the work happens here, and it's very strange. So that's why I said कि जितना मैं काम करने लगी उतना लोग खुश होने के बजाय और दुखी होने लगे, इसलिए आप भी रिबेल होती गई. हाँ, मैं और रिबेल होती गई और उस हिसाब से थोड़ा डिस्टेंस बनता गया. एंड पीपल मेक्स द फॉन्डेस्ट टू द प्लेस with the place, and that's the reason I don't go to my hometown quite often. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि as the male feminist what we are trying to do is also try and say that as men हमारी conditioning कई जगहों पर गलत रही है. As men and also as females. Yeah. एक घर में दो बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और ऐसे कंडीशनिंग हो गया है कि जो माँ बाप है वो लड़के के साथ ही रहेंगे. ऐसा क्यों, मुझे ये नहीं समझ में आता है आज भी. क्यों वो लड़की ने क्या किया कि उसके साथ नहीं रह सकती, वो नहीं रख सकती. Great question. And if she can, then why not? Why is it why, who has set the rules that the parents will stay with the son? Society, मतलब आप खुद ही ऐसे करते हो, फिर आप खुद ही बेटी होने से ऐसे मतलब दुख मनाते हो. मुझे तो ये समझ में नहीं आता है. मैं खुद बेटी हो के माँ बाप का ख्याल रखती हूँ, और मेरी जब बेटियाँ पैदा हुई मुझसे ज़्यादा तो लोगों ने मातम मनाया. फिर बेटी, मुझे तो खुशी हुई कि जैसी बेटी मैं हूँ, मेरी दोनों बेटियाँ अगर वैसे खड़े हो जाए, मुझे तो लड़के की ज़रूरत ही नहीं. क्यों लड़के की क्यों ज़रूरत है, मैं तो बेटी हूँ, मैंने ख्याल रखा. मैं बोल भी नहीं रही हूँ कि मैं लड़का जैसी हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, और मैं मेरे मम्मी पापा को मेरे साथ रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. सही है. और मेरी दोनों बेटियाँ हुई है, मुझे फ़क्र है क्योंकि मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है. और पूरी सोसाइटी इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लेना, तो फिर वो बेटा होने से खुशी मनाना और बेटी होने से जो दुख होना, वो खुद ही वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. लोगों को, मुझसे ज़्यादा तो लोगों को परेशानी होती है कि गुरमीत के मम्मी पापा क्यों नहीं रहते हैं, वो क्यों नहीं वो रहते हैं, दैट मीन्स ही इज़ अ बैड सन. एंड क्यों बैड सन? My brother also does not stay with my parents, and it's out of my choice because I said I want my parents to be with me. So that does not make my brother bad. बिकॉज आई वॉन्ट, मैंने चाहा मुझे ये दीजिए, तो आप बुरे हो गए क्योंकि आपने इसको पकड़ के नहीं रखा. किसके परिवार में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, किसके परिवार में क्या चल रहा है नहीं पता. और कोई रूल क्यों है, मतलब अगर बेटा रख सकता है तो बेटा, बेटी रख सकती है तो बेटी. अगर उनको अपने आप रहना है वो रहे, वो आए वो जाए, उनको नहीं आना नहीं आए, उनको घूमने जाना घूमने जाए. बहुत सही बात है. मेरी को एक लाइन आई याद, मेरी माँ या ननिहाल में मैंने सुना था ये, कि वो तो बेटी है ना बेटा, वो तो पराई हो गई. आई थिंक वो कंडीशनिंग वाली वो एक लाइन ही जड़ है मेरे ख्याल से इस चीज़ की, क्योंकि सब चीज़ से everywhere women are fighting. Let's say even if there are family feuds about property and the women say I also have the right, and I think it's rightfully so, and now the court agrees and there's legal systems in place, but like exactly that line is the problem. वो conditioning की लड़की तो पराई है,
That is where the issue is, I think. हाँ, तो वही इशू है कि हम एज अ सोसाइटी हम खुद ही एक लड़की को इस तरीके से नहीं देख सकते. हम खुद ही एक लड़की को एक ऐसा औधा देके रखे हैं कि वो है कर्ता धर्ता विधाता. वो रखेंगे माँ बाप को. लड़का. हाँ, एक लड़का वो रखेगा माँ बाप को. लड़की तो रख ही नहीं सकते, और लड़की रख लिया तो एबनॉर्मल हो गया पूरा. मतलब जैसे सोसाइटी का बैलेंस ही बिगड़ गया. क्यों? क्योंकि हमारी समझ से दूर है वो, इस वजह से ऐसा हो गया. मेरे को ऐसा लगता है. मेरी नहीं, मैं हमारी सोसाइटी. यस. किस समाज, मतलब हाँ, समझ से दूर. मैं बहुत सीरियस हो गई थी अभी. हाँ, नहीं, आई गेट इट, आई कंप्लीटली गेट इट, एंड आई नो वेयर दैट pent up energy came from. Yeah, our parents are getting older. This conversation is a conversation I've had with my friends, and I know friends who've said आप अपना ख्याल रख लो भाई, which is also fair, I think. और खुद ही दुखी होते हैं. आई मीन आई हैव सीन पीपल हु जिनके एक बेटी थी, उनकी और एक बेटी पैदा हुई, तो फ़ोन करके इतना मायूस होके खबर दे रहे हैं. और हमने वो खबर को इतना खूबसूरती से लिया क्योंकि आपकी सोच में ही वो तकलीफ़ है. तो इसीलिए हर एक चीज़ को, मतलब पूरे सोसाइटी का जो डिसबैलेंस अब तक हुआ पड़ा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट मेजरली. या थोड़ी सी सोच को बदलने की. सोसाइटी का सोच ही जिस दिन लड़का हो या लड़की हो वो इक्वल हो जाए ना, तो कोई आदमी अपने आप को क्या बोलते हैं, शवाशेर, सवाशेर, राजा बेटा सिंड्रोम, आई कॉल इट. नो, राजा बेटा सिंड्रोम नहीं, एनी काइंड ऑफ सिंड्रोम, हैवान सिंड्रोम, राजा बेटा सिंड्रोम, और अपने आप को आई एम दैट मेल टाइगर. तो कोई सा भी सिंड्रोम एक आदमी में नहीं आ जाएगा, और सोसाइटी में सही मायने में बैलेंस होगा. It is in this very line that the truth exists. कि it starts with the राजा बेटा syndrome, goes to मैं राजा हूँ, टाइगर हूँ syndrome, and eventuality is that lead up to heaven only. It can have different lines that will lead up to that, but that fucker is born here. Yeah. And our society is giving birth. You are the beta. You can do anything, beta. और बेटी ने कर दिया तो कैसे कर दिया? पहले तो उसको समाज से बाहर कर दो, फिर उसको एक्सेप्ट कर लो, फिर उसको बोलो कि अरे लेकिन तुम ना ठीक नहीं कर रहे हो, ज़रूर उसमें गड़बड़ी है. हाँ, तुमने कर लिया मतलब वो है. एक आदमी जब नहीं भी करे ना, वो आदमी जब रिलैक्स्ड रहे तो सोसाइटी उसको भी वो करते हैं. जैसे आई मीन टू माई डैड दे सेड कि यू आर बीइंग टू मच, टू लिबरल फॉर योर डॉटर, एंड telling my brother and my husband that you guys are not man enough, you are not keeping your parents with you. So नहीं करे तो ये I think it's the mindset of the society कि लड़कों को इसी तरीके से देखो, लड़कियों को इस तरीके से देखो. तो जिस दिन अब जेन्युइनली जिस दिन इक्वालिटी आ जाएगा, जिस दिन आप एक बेटी होने से मन से खुश हो जाओगे और दूसरी बेटी होने से उससे भी ज़्यादा खुश हो पाओगे, तो देखना द सोसाइटी में बैलेंस स्ट्राइक हो जाए. So I will just move on to understanding then your career graph while you're also dating. That also came into question a lot because as actors कई बार क्या होता है कि your co-actors you do link ups with. You were already dating Gurmeet when he had these stories come out. How your relationship breaking out to the world, how was that for y'all? And two, when these link ups का bucker happens, how does that affect you, or y'all are secure? No, mine and Gurmeet's relationship dates back to like now, as long as I am here in Mumbai. So, I mean, initially we were friends, and then we started living in together, and then we did Ramayana together when even the makers did not know that we are dating. So that is how much under wraps we had kept. I mean, there was no hanky-panky, there was no, he's left the set, so I'll go, my call time, his call time needs to be set. We just worked. And both of us come from the same mindset that we have come to Mumbai to work. So for us, work is our priority, and then comes anything. Even today, I mean, अगर ऐसा है कि कुछ फंक्शन भी आ गया, कुछ भी हो गया और एक बड़ा काम आ गया एक जन का, maybe I'm free, even if he is busy with something, he would choose the work, and that comes unspoken. I don't need to give him permission. He does not need to give me permission. Okay, जाओ ठीक है, चलो काम करो, because हमें पता है कि हमारा priority काम है. So that is why I think we are in a very safe place. हम लोगों को एक दूसरे को मतलब कुछ शूट करने के लिए या कुछ ऐसा कुछ भी, मतलब कुछ भी हमारे सीन का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक दूसरे के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है.
विथ टाइम आई थिंक वी हैव इवॉल्व्ड, और अभी ऐसा हम लोग एक सेफ स्पेस में है कि कुछ न्यूज़ किधर से भी आता है हमें कोई जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी लिव बाय आवर रियल लाइफ, नॉट बाय द वर्ल्ड दैट इज़ क्रिएटेड। बिकॉज इतने सालों में अब तो ये पता चल गया है कि मतलब कुछ भी आप करो तो वो कहानी ट्विस्ट होके कहीं और पहुंच जाता है, कुछ भी होता है लोगों का एक्सपेक्टेशन है कहानी बन जाता है, तो वी लिव इन अ रियल वर्ल्ड। जब आप बम्बई आई तो डिड यू, बिकॉज यू डन फिल्म्स, आई एम श्योर यू मस्ट हैव नॉट हैड रन-ins with casting folks which are the negative kind which we hear about, or were there any incidents that you recollect? After coming to Mumbai, I said I felt that this whole thing is dominated by males. The South is predominated by males. Getting the break wasn't the most difficult part. It was really easy for me. But after that, while I was filming, it was very difficult, क्योंकि मुझे मतलब हर एक दिन ऐसा लगता था बाप रे, the director will come and tell me a certain thing and I will say no, and फिर और set पे मेरे ऊपर 10 लोगों के सामने he will humiliate me for forgetting my lines and all. मतलब कहीं का गुस्सा कहीं पे, हाँ। तो ऐसे दिन गए मेरे, और तभी भी मैंने अपने आप को मुंह बांध के मैंने रखा था कि बस मुझे ये काम करते रहना है जितना जब तक कर सकती हूँ मुझे ऐसे अवॉइड कर जब तक होता है, और जिसके आगे नहीं होगा तो फिर उसके आगे if it does not go with my sensibility, फिर मेरा वहाँ पे full stop लगेगा। कुछ हुआ incident? I'm just, if you're okay talking about anything at all. Yeah, I mean, for the first film it happened, in the sense the director, he was pretty big, and he took me for a drive, and then he was like, come on now, give me a kiss, and I was like, and I was very young, मतलब I was really young, I was like 20 or something. तो एक बार मुझे लगा कि ही इज़ थिंकिंग आई एम अ बेबी और व्हाट, आई थॉट दैट ऑल्सो। फिर आई एम लाइक नो, ही वुड नॉट थिंक, आई मीन आई एम द हीरोइन आफ्टर ऑल. So when you are very young, you are a little gullible also. So lots of thoughts came in my mind, and I was like, no, I'm not comfortable. And he just drove me back, and then I mean, in the set, whenever I would forget my lines, he would be 10 times angrier than ordinarily he would be. So like in the corporate space हमारी काफ़ी बातें होती हैं कि when one partner earns more than the other partner, one partner becomes more famous than the other partner. Were there ever those things happening in your dynamic? Because there have been differing points in both your careers. नहीं, ऐसा नहीं हुआ, because it started the other way around according to society. And you were more famous? Yeah, because I was already working in South films. Correct. And you were a full-fledged heroine. Yeah, right. and I was already had done a lot of campaigns in Kolkata. Correct. So obviously there were some references or the other here in Mumbai. तो I used to earn, और बाकी मुंबई में रहकर भी काम करती थी. So that time he never used to, or that's when I mean our beginning only is like that, when we have seen that the female partner earns more, and I was only running the house. I was only selecting, okay, fine, this is in our budget, we would be living in this apartment, even though we liked something, but we will have to live here because that's what the budget permits. After that, a phase came when Gurmeet got Geet and his career took a jump start, like catapulted into the fame and all those things you have seen, and you are seeing कि Gurmeet जैसा लड़का, but we had a different start. People don't see that. When you have when you think कि तुमको एक anchor चाहिए, और एक anchor in the sense financial stable anchor चाहिए जिस पे आप बस hatch करके अपनी ज़िंदगी पार करोगे, तो वो लड़का कभी नहीं मिलता है. तो आप पहले खुद को काबिल कर लो उतना, फिर आप किसी का भी हाथ पकड़ के आगे बढ़ो, वो सब बैलेंस हो जाएगा. You've had a rough patch in between. Do you want to talk about that at all? I talk about that in the sense only to motivate people that life is like that frequency bar. It is full of highs and lows. So when you are high, so never get too overwhelmed. Because the low patch just might come anytime. Right. And when you are low,
just know and hang on, because the high is on the way. So only for that I talk about my rough patch, is just to stay positive. I know it is very difficult with so much of societal pressure, with expectation, and the stress that a female body goes through, a man cannot even fathom. And all these things are just matters even 1% only when your husband is with you. To impress the husband, it is not worth it. So at the end of the day, hold the hand of your husband and travel this journey together, because it is both your journey, it's not your journey alone. And the core of it is just be happy, because I genuinely had complications, in the sense that is it I mean, there was negative remark from some of the best doctors, and when beyond everything suddenly a natural conception happened, that actually reinstated the whole thing, that with your own happiness, even your body changes. Our body changes with my own happy space. No doctor, no medicine, even the doctors were surprised, and I mean, the doctor who just wrote things off was surprised when you I were had written off at one point. Absolutely, absolutely. That it's not happening, the lining is not correct. If people who are, all these The women medical who are experts going probably. through, no, all the women who are going through, they are experts in their own way, because they know what their body is going through. Endometriosis, adenomyosis, PCOD, PCOS is just the baby of endometriosis and adenomyosis. 85% of the female right now suffers from endometriosis and adenomyosis, and it's a very critical condition. And the thing is that there is no medicine or no medical cure. So all that you can do, and I had done extensive study and research, and the only thing answer was eating clean. Lifestyle change. Yeah, a change of your lifestyle. Very enriching. Yeah, I think it's also very bold of you to use your voice to say the right things, because I think a lot of our influential voices don't speak up and speak as often or unabashedly just as you did just now. थैंक यू. एंड आई थिंक लोगों, जिस तरीके से लोगों से मुझे रिएक्शन मिला है, मतलब आई वॉज इन कैलकटा एंड अ लेडी वॉकड अप टू मी इन फ्लूरीज इन कैलकटा, एंड शी सेड दैट शी हैज़ हैड हर सेकेंड ट्रांसफ़र that day itself, and she has seen me that day. I mean, that we met, she met me, so she walked up to me and she said that I think it's a sign. And I just felt so good. She was crying, and I could understand the pain that a woman goes through during these things, the IVF sessions that a woman goes through, and everything is zeroing down to one thing: to have a baby. And the whole thing is, it is possible. मतलब today I can say confidently that it is possible without any medical intervention. But अगर मैं बोलूँ भी तो भी लोग करेंगे, क्योंकि लोगों को उस टाइम पे desperately चाहिए है. But 7 years of medical intervention and just 1 month of just living happily, I mean, things happened the same thing. So that's what I say. That's so interesting. So last final questions that are the male feminist kind of preset. If you had a message to the 16-year-old self, what would that be? And that's your camera. What feels extremely important to you at this moment, where you feel your life is getting shattered and you feel like, how will I even show my face? It will not matter at all after a few years. So nothing really matters. It's just time. Give yourself some time, and life will be really smooth. So just move ahead confidently. Thank you. What is something that men should stop telling women? I feel that a woman is a whole complete entity with, equal brain, or in fact bigger brains. People say that women has bigger head, bigger brains, so they can really take care of themselves.
इट इज़ जस्ट दैट डोंट टेल देम एनीथिंग कि घर लेट मत आओ, छोटे कपड़े मत पहनो, ऐसा मत करो, पति का सेवा करो, ऐसे करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको नहीं बोल के, क्योंकि उनको पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अराउंड का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मैन शुड मेक देमसेल्व्स अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि हम लोग को एग्जिस्ट कर सके स्मूथली। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा। मजा आया? ऐसा मुझे लगा पूरा रश डाउन द मेमोरी लेन ऐसा कुछ हुआ। या इट्स सुपर्ब यार। अगर आप लोगों को सेकंड पार्ट देखना देवीना जी के साथ, क्योंकि मेरे करीब मदरहुड के करीब 20-25 क्वेश्चन और होंगे जो मेरी इंसाइट, मेरी प्रोड्यूसर की इंसाइट्स हैं। 1000 कमेंट कर देना इस वीडियो पे। हम लोग एक और बार आ जाएंगे मदर्स डे के आसपास आपके पास, ठीक है? Thank you so much for being on the Male Feminist. This was me, Sid, signing out. But do not forget to like, share and comment and subscribe to the Hauterrfly. आप भी बोल दो subscribe to the Hauterrfly. Don't forget to like, share and subscribe to Hauterrfly.